నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారు హైదరాబాద్కి వచ్చారు. నౌ ఈజ్ ఎంఓఎస్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్. అందుకోసం వారు హైదరాబాద్ రావడం మనందరికీ కూడా ఒక రకంగా ఆనందకరం. మాకు చాలా సమాచారం కూడా వస్తుంది మిత్రులందరికీ. అదేవిధంగా వారితో పాటు వచ్చిన వారు శ్రీ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, బీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, మన పార్లమెంట్ సభ్యులు, మన ప్రీతమ నాయకుడు శ్రీ బండి సంజయ్ గారు ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు. వారితో పాటు శ్రీ ప్రదీప్ కుమార్ గారు, బీజేపీ రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా గంగారెడ్డి గారు, బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, శ్రీ కృష్ణసాగర్ రావు గారు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కూడా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు. శ్రీ అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారు నౌ ఈజ్ ద ఎంఓఎస్ ఫైనాన్స్. అదేవిధంగా గతంలో కూడా బీసీసీఐ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు, చాలా సీనియర్ నాయకులు బీజేపీలో. వారి డైనమిక్ యువ నాయకుడు కూడా, యువ మోర్చా ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ కూడా పనిచేశారు. వారు ఈరోజు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడతారు. అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారు మాట్లాడే కంటే ముందు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, మన పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం. పార్టీకి మిత్రులకు అదేవిధంగా కరోనా మహమ్మారితో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థనే అతలాకుతమవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా చెప్పుకునే దేశాలు కూడా అనేక ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఒక సాహసోపేతంగా ఒక మంచి బడ్జెట్ను రూపొందించి పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అభివృద్ధి, సంక్షేమం సమపాలుగా ఈ దేశ ప్రజలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో మంచి బడ్జెట్ను వాళ్ళ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకు వాస్తవ విషయాలు వివరించాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులందరూ కూడా దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ అనేక సమావేశాలు, పాత్రికేయ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తూ వాస్తవ విషయాలను ప్రజలకు వివరించే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇంత మంచి బడ్జెట్ను రూపొందించినటువంటి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ గారికి, దానిలో ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రులు శ్రీ అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారు కూడా దీనిలో ప్రధాన భూమిక పోషించారు. కానీ వారే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావడము, అనేక విషయాలను మాకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ బడ్జెట్ విషయంలో వాస్తవ విషయాలను వివరించాల్సిందిగా వారిని కోరుతా ఉన్నాను. नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो इस वर्ष के लिए बजट दिया है, उसके कुछ पहलू आप सबके सामने रखने के लिए, जैसा आपको विदित है, as you are aware that the India and the entire world went through the COVID-19 pandemic. There were many challenges in front of India and the entire globe. India performed well under the able leadership of Prime Minister Modi. And Prime Minister rightly said, during the COVID-19 pandemic, that we have to look for opportunities during the time of adversity. आपदा में अवसर ढूंढने। मृत्यु दर दुनिया भर के जिन देशों में सबसे कम रही, उनमें से एक भारत है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाना
उसमें भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया है और 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाने का काम भी किया है। कोविड-19 के समय जब हमने कहा आपदा में अवसर, तब सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स पावर, कोल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, स्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन, इतने सारे क्षेत्रों में रिफॉर्म्स लेकर आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। इंडस्ट्री को पैसा देना था, स्टेट्स को पैसा देना था, गरीब को अन्न और धन दोनों की कमी ना आए, वो भी मोदी सरकार ने की। हमने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल और चना देने का काम दुनिया में किसी देश ने किया तो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर उद्योग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सबको एडिशनल 20% वर्किंग कैपिटल बगैर किसी कोलेटरल, बगैर किसी गारंटी के दी तो मोदी सरकार ने दी। ये सब बातें मैं आत्मनिर्भर पैकेज की बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वहीं से वापसी का रास्ता शुरू हुआ। जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें तेजी के साथ वी शेप रिकवरी होनी शुरू हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 4 महीने लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हर महीने में भारत में हुई और जनवरी महीने में 1,20,000 करोड़ की लगभग जीएसटी कलेक्शन हुई, रेवेन्यू आया। अब हम सबके सामने चुनौती थी कि अगला बजट कैसा। नाउ विल कम स्ट्रेट टू द बजट एंड provisions made in the budget or the announcements of the budget for the year 2021-2022. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बजट में वो सब कदम उठाए गए कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने और अगले 4-5 वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। पिछले वर्ष यानी कि इस वित्तीय वर्ष में 20-21 में हमारा बजट था 30,42,000 करोड़ का। द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 was 30,42,000 crore rupees and budget for the year financial year 21-22 has been increased by 4,08,075 crore rupees to the tune of 34.50 lakh crore rupees। 4,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी 21-22 के बजट में भारत सरकार ने रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 34.5% की वृद्धि है। 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जाएगा। And if you look at the health budget, health and wellness budget, there is an increase of 137%. It has gone up from 94,000 crore rupees to 2,23,846 crore rupees. अगले साल हेल्थ एंड वेलनेस बजट 2,23,846 करोड़ रुपया होगा, जो 137% की वृद्धि है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो नई योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। देश के 650 जिलों में अस्पतालों को में सुधार करना, हमारे हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में और सुधार करना, टेस्टिंग लैब्स और बाकी सब सुविधाएं देना, इस सब की तरफ प्रयास किए जाएंगे।
हर घर नल, नल से स्वच्छ जल. Every house will have potable drinking water, clean drinking water. And an amount of 50,000 crore rupees has been earmarked for the Jal Jeevan Mission. 50,110 50,011 करोड़ रुपए का प्रावधान जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है. अब तक 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना से मिला था. 1 करोड़ और महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर मिलेंगे. हमने पिछले साल मनरेगा में रिकॉर्ड बजट 61,000 करोड़ रखा था. फिर कोविड के चलते उसमें 40,000 करोड़ की वृद्धि और की, फिर 10,000 करोड़ और दिया प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना में. इस साल हमने बजट को 61,000 करोड़ से बढ़ाकर 73,000 करोड़ रुपया किया है. यही नहीं, अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में 1,10,000 करोड़ रुपया हम किसानों को दे चुके हैं. हर किसान को 6-6 हजार रुपया उसके खाते में आता है साल में. फॉर द ईयर 21-22, 65,000 crore rupees has been earmarked under the PM किसान सम्मान निधि. 65,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के लिए पीएम किसान योजना में रखा गया है. प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी 32 स्टेट्स में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग हो, उसका प्रावधान करने का हमने किया है. असम और बंगाल के टी स्टेट के जो मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर मिले और पर्याप्त सुरक्षा हो, इसका भी प्रावधान किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए. मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा. 112 आकांक्षी जिलों में पोषण अभियान की शुरुआत और इसके और बेहतर परिणाम हो, मिशन पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा. कृषि क्षेत्र में जैसा मैंने पहले कहा, किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपया पीएम किसान में किया, तो अब किसानों को सुलभ ऋण योजना मिल सके. तो पिछले बजट से इस बार 10% की वृद्धि की गई है. 16.5 लाख करोड़ रुपया ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध होगा. यह भी हमने करके दिया है. पिछले साल भी हमने 1,000 से ज्यादा बाजार, ई बाजार के साथ मंडियों को जोड़ा था. इस साल भी 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई बाजार यानी कि ई नैम के साथ जोड़ा जाएगा. ग्रामीण विकास निधि को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया किया गया है, ताकि गांव-गांव में और पैसा खर्च हो सके. यह मनरेगा के अलावा अलग से है. माइक्रो इरिगेशन स्कीम को, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा हो, सिंचाई योजना ज्यादा हो, माइक्रो इरिगेशन को भी दुगना किया गया है, बढ़ोतरी करके 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है. माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए प्रावधान किया गया है. किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमने पहले ही कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको लागू किया. और यूपीए की सरकार, कांग्रेस के समय में और हमारे समय में, हमने एमएसपी की खरीद 2.5 गुना ज्यादा की है. द प्रोक्योरमेंट एंड द प्राइस was 2.5 times more than the UPA time,
under the MSP regime. We have spent close to 8 lakh crore rupees on the procurement of food grains and pulses. स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाने के लिए 15,000 नए स्कूलों को इसमें चुना गया है शिक्षा के क्षेत्र में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और काम किया जाए, हम वो भी करने वाले हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 38,000 करोड़ रुपीस का नए स्कूल बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 5 साल में, ताकि और रिसर्च हो और पेटेंट फाइल हो सके, हिंदुस्तान में और आगे काम करने का अवसर हो। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, इससे भी देश भर में और लाभ मिलेगा। डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। 4.78 lakh crore rupees will be spent on the procurement of items related to armed forces or the defense forces, and there is an increase on the capital expenditure, budget for the capital expenditure as well. अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले इतना ही कहूंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट भी हमने बढ़ाया है, 1,75,000 करोड़ किया। सेंसस भी डिजिटल होगा तो 3,768 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया गया है। अगर आज आप देखें तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 590 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। India has forex reserves more than 590 US billion dollars, which is the highest ever, and it is up by 119 US billion dollars from the previous year. And if you look at the external debt, it is only $554 billion. So considering the forex reserves, India now is a net creditor. टेक्सटाइल पार्क्स, हम 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क्स खोलने वाले हैं। मित्र नाम से इसको प्लग एंड प्ले मॉडल के रूप में देखा जाएगा। हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट भी यहां से शुरू होगा। नई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उपलब्ध होगी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। ये बड़ी लंबे समय से मांग थी, 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बनेगी जिससे बैंकों के जो एनपीए है उनको खरीदने का और क्लीनिंग का काम होगा बैलेंस शीट्स को। ये बजट इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पारदर्शी है और देश को, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला है, जिसके कारण आपने पहले दिन भी देखा होगा सेंसेक्स में 2200 अंक से ज्यादा उछाल थी, अगले दिन 1,1200 पॉइंट से ज्यादा उछाल थी। और अब जीरो एक्स्ट्रा बजटरी बोरिंग्स जो पहले कभी एनएसएसएफ या बाकी सब के माध्यम से दिखाई जाती थी, उसको भी साफ करके आज बजट पर दिखाया गया है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार में देखने को मिली तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिली है। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर से एफडीआई भी अप्रैल से अक्टूबर तक रिकॉर्ड कोविड के टाइम पर भी भारत में आई, क्योंकि भारत में अच्छा नेतृत्व, अच्छे निर्णय करने वाली सरकार
और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, उसको लेकर आज दुनिया का विश्वास भारत में बना है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने ईज ऑफ कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो बहुत सारी बातें उसी दिशा में होंगी। अगर लेकिन 2-3 बातें अगर आप कहेंगे तो मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि जो पहले 6 साल तक के इनकम टैक्स के केस खुल जाते थे, अब केवल 3 साल तक के खुलेंगे और स्पेशल परमिशन के बाद ही 10 साल तक के केसेस को खोला जा सकता है। और उसमें भी एक सर्टेन लिमिट है, जिसके पीछे डेटा अगर होगा, पर्याप्त सबूत होंगे कि किसी के खिलाफ वो कार्रवाई करने की, तभी खुल पाएगा। और जो रिलीफ दिया डिविडेंड के लिए कि जो डिविडेंड पे करते थे रीट और नीट के लिए, उसके लिए भी हमने रिलीफ दिया टैक्स पेयर्स को। यहां तक कि जो 50 लाख तक की जिसकी आमदन है और केवल 10 लाख तक का ही उसका डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स है, वो भी अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकता है। ये भी फेसलेस होगी। जैसे हमने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की, उसी तर्ज पर ये फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी, ताकि लोगों के डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो सके। ये भी बहुत बड़ा कदम है। फेसलेस इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। देखिए, इतनी मोदी सरकार ने कदम उठाए कि फेसलेस, ताकि इंटरफेस खत्म हो सके। जो तंग किया जाता था, टैक्स टेररिज्म होता था, उससे मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के आम नागरिक और व्यापारियों के लिए किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे मान लीजिए मेरे किसी पत्रकार भाई को या किसी और मध्यम वर्ग के या लो इनकम ग्रुप के व्यक्ति को घर खरीदना था, तो अब आपको जो 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलता है, डिडक्शन मिलती थी, वो भी 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, ताकि आप घर खरीद सकें। और सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग और हो तो उनके जो कंपनीज को फायदा इसमें मिलता था टैक्स हॉलिडे का, उसको भी 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है 31 मार्च 2022 तक। और अफोर्डेबल हाउसिंग या रेंटल इनकम जिसके आती हो, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसको भी हमने किया है। नई टैक्स एग्जम्पशन पॉलिसीज पे लेकर आएंगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। क्योंकि हैदराबाद में बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए 1 साल और हमने जो टैक्स हॉलिडे था वो उसको भी बढ़ाया है। द एलिजिबिलिटी पीरियड टू क्लेम टैक्स हॉलिडे फॉर द स्टार्टअप्स is extended by 1 more year to 31st March 2022. In addition to that, in order to incentivize investment in the startups, it is proposed to extend the eligibility period for claiming capital gains exemption for investment made in startups by 1 more year till 31st March 2022. ये भी फायदा स्टार्टअप्स के लिए है। और जो डिजिटल पेमेंट्स के ही अपना काम धंधा करता होगा, 5 से 10 करोड़ तक की जिसकी डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से ज्यादा होती होगी और 5 से 10 करोड़ तक जिसका काम है, उसको भी ऑडिट से एग्जम्पशन मिलेगी। यह भी एक बड़ा सहूलियत उसको दी गई है। ऐसे बहुत सारे कदम हमने उठाए, सब पे चर्चा नहीं अभी कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं। रेलवे लाइन को लेकर अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो रेलवे के 9 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स कवरिंग लेंथ ऑफ 1071 kilometers and amount to the tune of 15,409 crore rupees. Railways lines, which is, doubling project covering a length of 1,422 kilometers, an amount of 14,172 crore rupees will be spent on that. So ऐसे 15 प्रोजेक्ट हैं जिसकी कुल कीमत 29,581 करोड़ रुपया है।
2493 किलोमीटर की ये लेंथ है। ये कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में पड़ता है, कई जगह पूरा हिस्सा ही तेलंगाना में पड़ता है कुछ रेलवे लाइन का, और इसको डिफरेंट स्टेज पर है ये प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन की और अप्रूवल की। और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी 1450 किलोमीटर को देखा गया, जिसके ऊपर 1571 करोड़ रुपया खर्च होगा। जो नई नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है विजयवाड़ा टू इटारसी, ये भी तेलंगाना से होकर गुजरेगी। इसको भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टेकअप किया गया है। टैक्स डेवल्यूशन में भी 21-22 में तेलंगाना को 13,990 करोड़ रुपया मिलेगा। फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स में 2,905 करोड़ रुपया। और हमने पहले भी कोविड के समय तेलंगाना के लिए भी एफआरबीएम एक्ट में भी वृद्धि की, 3% से बढ़ाकर 5% किया। वेज एंड मीन्स एडवांसेस को भी 60% से ज्यादा बढ़ाया था। स्पेशल असिस्टेंस भी तेलंगाना राज्य के लिए अलग से करके थी, लगभग आई थिंक 380 करोड़ रुपए के लगभग शायद वो थी। बाकी कदम भी उठाए हैं। अन्न और धन जो चाहिए था वो भी केंद्र की ओर से मिला। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप जो यहां से कोऑर्डिनेट करेंगे वो एक एक करके प्रश्न ले सकते हैं। रत्ना जी। I'd like to ask Yeah, you a yeah. question. While IMF has actually appreciated the union budget, Rahul Gandhi says that the BJP has messed up not only the budget, the economy, the defense sector, and also the peace in the nation, and now trying to divert issues on small trivial matters. Let me first respond to the first question. This budget is appreciated by each and everyone, except few political parties who are in opposition, and they have a role to play. When every section of the society has appreciated, look at the increase of budget for the scheduled caste and scheduled tribe, and all those socially backward classes. It has gone up, the allocation has gone up by 51.65% from the previous budget, and only across all ministries. And if I have to speak specifically about the Social Justice and Empowerment Ministry, the budget has gone up by 28%. Look at the allocation of 38,000 crore rupees for 750 Eklavya schools, more than 100 Sainik schools. There's another allocation. There will be, that's a new project apart than the 38,000 crore rupees for the Eklavya schools, 750 in the tribal areas. Even for the marginal people or the workers who want to work with the Manrega, Congress used to spend only 30,000 crore rupees. We have earmarked a budget of 73,000 crore rupees. For the defense also, there is an increase in the budget allocation substantially as far as the capital expenditure is concerned. There are three heads: wages, pensions, and the capital expenditure. So there is increase in the capital expenditure, which clearly showcases that the India has increased its procurement for the defense. We are preparing well as far as the defense preparedness is concerned. And the Congress or the UPA failed even to buy 150,000 bulletproof jackets in 10 years period. We have procured close to 2 lakh bulletproof jackets and distributed it to the armed forces. We have procured Rafale jets. We have procured fighter jets. We have placed another order of fighter jets, helicopters, and other requirement of the defense.
At the same time, we have brought in reforms. Whereas in the past, India was known only for as the largest exporter of the defense equipment across the world. Now, we have earmarked more than 110 items which will be manufactured in India as far as the defense production is concerned. So we have increased the defense budget as well as the capital expenditure is concerned. We have given priority for Make in India in the defense equipment production to be done in India. And we have taken all the steps needed to take on the border for the safety and security of our borders and the country. And let me say this, the total number of cases as far as Naxalism and the terrorism is concerned has come down during the Modi government time. Let me also tell Shri Rahul Gandhi to please have a look at the tax burden during his time, and That is not the chart by Rahul Gandhi. That's the chart by the opposition members saying that the budget has actually bypassed the taxpayers. Those who are paying tax and the middle class who are paying tax. see in various heads, if you look at, there is a lot of incentives for them, like for buying houses, for creating more infrastructure for them, whether it is new gas cylinders, water, health, education, other facilities. Look at the roads. We are going to spend 1,18,000 crore rupees on the capital expenditure as far as the road and surface transport ministry is concerned. There will be 1,10,000 crore rupees capital expenditure as far as the railways is concerned. 50,011 crore rupees as far as the Jal Jeevan Mission is concerned. 2,23,000 crore rupees as far as the health and wellness is concerned. So this is all for the citizens of India. We have not put even a single rupee burden, a new tax on any citizen. Everyone talked about, many papers and the electronic media reported that there will be COVID tax. There will be tax, additional tax. Prime Minister Modi made it, told us very categorically that there should not be any additional burden on the taxpayers. And we have made sure that there is no additional tax burden. प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा था, कोई नया कर ना लगे, हमने कोई नया कर नहीं लगाया है, उसके बावजूद 35,000 करोड़ रुपया कोविड वैक्सीन के लिए भी प्रावधान किया है. Sir, is there any chance to come down the petrol charges? And is it true that central government has lifted the subsidy on gas cylinders? Two issues. I think media must print or show it on the TV that what is the tax collection for the center and what is the tax collection for the state as far as the petroleum products are concerned. That will give you the real picture. So the common man will also understand what is the tax share as far as the states are concerned. And as far as the central government is concerned, whatever changes we have made changes by introducing agriculture infrastructure cess to raise funds to create infrastructure for the farmers of this country. Whether it is storage, cold storage or other facilities, we have brought down the excise duty and introduced the agri infrastructure cess. There will not be any additional burden on the common man as far as the petroleum prices are concerned. Not even a rupee, not even a 50 paisa. रसोई गैस में 1 करोड़ नए सिलेंडर देने जा रहे हैं. It depends on the international prices of the gas. Like on the crude oil, it is similar with that. After the Cabinet Committee for Economic Affairs has approved the disinvestment in Vizag Steel, so there is a tension among the Vizag Steel employees and other private sector companies that our companies will also get into this disinvestment too. Is that true? Any other companies are coming under that? Let me make it very clear. The government of India has a very transparent policy
priority and the non-priority sectors. Now the Niti Aayog decided which are the strategic and the non-strategic sectors. In the strategic sector, you could have one PSU. In the non-strategic, you can't, I mean, there is an option that you can get away with everything. But the government of India will decide from time to time which company can give you good amount of money, which could be further spent for the growth of India, for the common man to create more facilities as far as the area of education, health, road, rail and other amenities are concerned. That is another area. Now government has decided that how those public sector enterprises, they can do better or there could be further growth. From time to time there will be disinvestment which will take place. Not all the companies which will be put on the sale. No, not like that. It is the Niti Aayog which will decide strategic and non-strategic sector. The cabinet will give its approval. Post that the process will start. If you look at the past experiences, the companies have grown post disinvestment. Many cases. The salaries were better for the employees. There were growth, ESOPs for the employees as well. So I think if there is any disinformation, we'll try to speak to those who are the stakeholders. And the decision will be taken from time to time. The companies who were not doing well before the disinvestment, they have also started doing well. The market cap has also improved. So that is a net benefit for the workers also, for the company and for the nation also. देखिए कॉमन आदमी जिसने मार्केट में पैसा लगाया होगा उसका पैसा भी तो बड़ा होगा. Nobody can ignore Telangana. Sir, but both the states are unhappy saying that they've been left empty-handed. There is no specific allocation for states. सौभाग्यनगर में बैठ के, if you look at the entire allocation, even during the COVID time, we believe in cooperative federalism and we take all the states together. There is allocation for metro, water, education, road. If you look at the number of road projects here, these are total 53 and 2,111 kilometers and 20,800 crore rupees will be spent on that. It's not a small amount. If you look at the railway projects, I have already said more than 29,000 crore rupees for the railway projects at various stages. Yeah. And tax devolution also, for this 13,990 crore rupees. So what about state-specific projects like Polar? Like Andhra has been seeking funds from the center for state. There's not been any mention of the same in this type of budget. No, as per the agreement, we have given the money. I met the Andhra finance minister 3 times in last 5 months, and we have relieved the funds as well as per the agreement. Would it be possible to tell us a figure how much of that is? Off record, as of now, I won't be able to, but I'll send it to you. Thank you. These are all expenditure outlays. Ratna. Sorry, these are all outlays. Ratna. So this will happen only when the schemes will be actually launched. So how soon do you think all the schemes are announced? So it depends on the states as well. How quickly you do the land acquisition, availability of the land, environment and the forest clearances and all that. There are many other factors, but as far as the Government of India is concerned, there is no shortfall as far as the allocation of funds are concerned. And I'm sure with more capital expenditure, if you look at the infra companies, there are many companies from this part of this region who are doing extremely well.
not only in South but across the country. If you look at the digitization, whether it is for the census or other areas, startups and all that, all those schemes is going to benefit many companies in Telangana and in Andhra Pradesh సంజయ్ గారు majorly. And if you look at the ports, there is an allocation of funds of more than 2,000 crore rupees for the ports. So who will benefit? States like Andhra and Telangana. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఏం మాట్లాడతలేరు వాళ్ళు బడ్జెట్ మీద